clear? Saturday is a holiday for the schools, correct? Yes. Almost all the schools. Yes. I was in the chapter 4. Natural legends we have completed. Last time we completed tropical desert school. Okay. Yeah. Very good. Tropical desert dance. Yes. Then we have temperate grasslands and tundra and taiga, correct? Just check, was the last topic human adaptation? Yeah. Tropical, What the brain map? that's it. Tropical monsoon type, not that. No. I think so. Was that getting? I hope these days keep coming. Let us see what we can do. Okay? Yes. By the time we will only 2 lectures, not today. 3 lectures. Three lectures. Yeah, okay. Not good. Good, sir. Very good. Huh? That's so sweet. Now we are first going with the location, correct? Yeah. Normally found in Southern Asia. Normally found in Southern Asia with wet monsoons in summer, with wet monsoons in summer and dry monsoons in winter. And dry monsoons in winter. Second point. On the eastern coast of tropical lands, on the eastern coast of tropical lands, marine type of climate or marine climate, not marine actually. Whereas you write whereas, sorry, yeah, which receives steady rainfall.
which receives steady rainfall from trade winds from trade winds. Now to explain to you what is this tropical monsoonal climate. Don't you think India also falls under this category? Yes. Correct. And they say normal it is South Asia, Southern Asia, Indonesia, Malaysia. You see, this regular monsoon is a feature where in India also we have. If you have seen the first monsoon, is Kerala, right? India का पहला monsoon Kerala, and then we have Andaman. If you see these two places, I cannot say Andaman as a state, UP, you know that. They say out of 12 months, they get 7 months good rainfall. Maharashtra almost 4 months. Except Tamil Nadu and Andhra, पूरा India को rainfall मिलता है कि नहीं? And the climate is also so that normally you will have monsoonal type मतलब क्या है? It is the arrival and departure of monsoon only sets the other climate. Is in India happening? Yes, it is. When I teach you climate in your 10th standard, we say arrival and departure of Monsoon. will set right the other seasons accordingly. Whether you were the first person to arrive, and I was the second. But does it affect the other person's arrival? वो अपने टाइम पे आ सकता है, पर नहीं आता। हमारा monsoon क्या करता है? जून to September उसका सीजन है। But if it starts in the month of July, September की जगह पर एक महीना आगे जाएगा। September क्या है? It might get into October. The other season, which was October to November, 1 month, it will go into November to March. December, एक ही महीना। और जो अक्टूबर टू नवंबर था, भी नवंबर से दिसंबर हो गया, तो वो क्या करेगा? जो दिसंबर टू फेब था ठंडी, that will become Jan to March, है ना? वरना March to May मतलब it's your holidays. Which holiday starts? Summer. देखो holidays में हम लोग summer holidays बोलते हैं, है ना? Summer vacation. In fall, European countries they are having a fall. What is this fall? Winter. And which fall it is? Snowfall. And children get the same holiday that you and me get for summer vacation. उधर तो summer है ही नहीं, है ना? Either autumn. You know what is autumn? Yes. Little bit, हाँ, little bit of heat. वो उनको लगता है कि बाबा बहुत गर्म है। हमारा winter से भी अच्छा है autumn उनका। हम लोग winter से भी temperature drops. So we say this monsoonal climate is the word monsoon because the influence of monsoon in other seasons. When I teach you 10th standard, there I'll explain why it is a monsoon. Now you write areas. First you write Asia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, etc. And others, don't write etc. Now you write northern tip of Australia. Next, southeastern Africa or Southeast Africa and Madagascar. ये Madagascar मालूम है क्या होता है? Group of islands है वो, Madagascar Islands. आज हम लोग देखते हैं
Last time what you have seen? So, Africa one. What is that? Yeah. Forest we saw the PNG, Papua New Guinea. last to last. Never, but we'll not forget that. And then there's PNG, Metropolitan PNG, Papua New Guinea. How the tribal community is slowly and steadily coming up. Again, Madagascar, we can't say Maldives. You know what are Maldives are? Yes. Maldives is just islands. If tourists are band ho gaye, to Maldives is no more. Right? So Madagascar is better than Maldives because they have tourism, but they have their own activities. Madagascar Islands. Next. Eastern Brazil in South America. Eastern Brazil in South America. Then right, Central America. Next. Jamaica. Belize, Belitze. Honduras. एक और एक प्लेस है डाले याद रखिएगा इट इज निकारागुआ अरे छोड़ दो I know that you make fun of it but enough climate because these are the places that you and me might not have heard then better not write but definitely will forget and make spelling mistake I write climate it is generally humid and dry. Generally humid and dry. Next. Hot summers. अभी देखो ये क्लाइमेट पूरा इंडिया जैसे ही है. Hot summers. Cool winters. With a distinct rainy season. Look here. I said hot summers, cool winters, with distinct rainy season. Now why this word they are saying distinct rainy season? It means normal average rainfall. is this the meaning of the word distinct? No. Distinct means not so good, not so bad. That's it. Good. You try. Why are you doing that? I don't know. How is India's monsoon? It's sometimes very. Sometimes very what? Yeah. Is it distinct? Either you say yes or you say no. Is it distinct? I don't know. Yeah, I am giving you a knowledge which is very much distinct, perfect, exact time पे रहता है. अब ये जून to सितंबर हम लोग क्यों बोलते हैं? Although जुलाई में भी होता है, कभी जून में भी हो जाता है, but they have observed for 25 years, and हमारा monsoon जून मतलब जून में आता ही आता है. अभी my Singapore cousins whenever they call me they say, अभी क्या चल रहा है? Rain चल रहा है. क्योंकि उनका हर रोज rainfall आता है, and उधर winter है ही नहीं. इधर है क्या ऐसा? मतलब नहीं रहे. फिर इसके बाद समर है उसके बाद रेनफॉल है उनको ऐसा कोई सीजन नहीं बस एक ही सीजन है एंड एवरी डे दे गेट रेनफॉल आल्सो बट वो रेनफॉल आपको ऐसा लगेगा ये रेनफॉल है मतलब विल गेट थंडर लाइटनिंग एवरीथिंग बट 4 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा कैन से डिस्टिंक्ट मतलब इन दैट टाइम पीरियड यू विल गेट द रेनफॉल अभी तो हम लोग बोला मानसून की वजह से बाकी सीजन साइकिल शिफ्ट होता है right so the next point trade winds influence other seasons accordingly trade winds influence other seasons accordingly
ब्रैकेट में डालो onshore winds. What are onshore? Sure. Means that Moist रहेगा क्या dry रहेगा? moist. Sure. Yes. Offshore रहेगा तो वो dry रहेगा. अरे what is onshore and offshore? Onshore मतलब जो sea से आता है. Offshore मतलब जो land से आता है ना? As simple as this. Right temperatures. Summer temperatures is between summer temperatures is between 27 to 30 degrees Celsius, and winter 5 degree to 18 degrees Celsius. And winter 5 degree to 18 degrees Celsius. Next. सेम पॉइंट में कंटिन्यू करो. कोस्टल रीजन्स विंटर उतना ठंडा नहीं रहता है ना. कोस्टल रीजन्स 22 to 25. ये अभी मुंबई को ऐसे ही चल रहा है मालूम है ना. नेक्स्ट cyclonic disturbance. Cyclonic disturbance. Yes. A common phenomena. And monsoon depends on more on rainfall than on temperature. Sir, हमारे पेपर सुने थे. अरे वाह. How much you got? 34 है ना. 35. वो क्या बोल रहा है? सर करेंगे ये सर इस बार हिंदी में सामने. नहीं but 35 में से 34 and a half है ना. And then what? और 40 में से. Check. क्यों फिर? मुझे लगा ये सब 34 35 है ना. 40 में से only 34 and a half. Why? सर इस बार थोड़ा मारा. But it's also 35. And what is who is the topper? 40. Who is it? Just here. Three people got 40. No more than. Palash is also top 40. ना. वो गोदा नेपाली 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 नहीं है वो. गोरा चश्मा पहने. समझे. ये वो तो क्या? ये बाकी. ठीक है ना. Did you find out the mistake where you lost? Where? Object. छोड़ दिया. मैंने लिखना भूल गया वो लास्ट वाला. भूल गए. हाँ मैंने स्किप कर दिया मतलब गलती से. और before giving the paper don't you see through the paper? क्यों? नाम पेपर थी और मैप में फाइंड स्टार वाला एक. देख मैम ने पेपर नहीं लिया. तूने ओवर टाइम लिया है. मैम क्यों लेगा एग्जाम से पहले? 4 मिनट से पूछा दिया. तो फिर
more को नहीं बोल रहा मैं अपने पेपर ले लिया देखो one thing geography अभी चलो 9th of February okay 10th will be very lengthy keep on writing go left and right I don't know about history doesn't give you so much trouble because there is no choice at all सब कुछ करना पड़ेगा ज्योग्राफी को बहुत सारा चॉइसेस है तो आपको लगता है कि चॉइस की वजह से बहुत अच्छा उल्टा हुआ और टेंशन ये करेगा क्या वो करेगा वो कर दूंगी ये छोड़ दूंगी होगा बहुत ऑप्शंस हां तो अच्छा है ना ठीक है आई एम हैप्पी विद यू सो आई गॉट 36 और 40 वो भी तेरे दो मार्क आ गए थे है नहीं बना तो राउंड अप कर लेना क्या बात ठीक है आई थॉट यू गॉट आउट ऑफ दिस वन then let's see not 40 and that's less that is 37 yes that is also good na so what does it mean that you will just put little more effort and automatically you are on the topmost club are you ठीक है देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या आएगा I got 1 mark in lesson history it was 39 history is very lengthy for you like JEE is a good business no I का history is very Mughal Empire and Delhi Sultanate 5 chapters for UT 40 marks carry each month's sorry each chapter carries 8 marks ऐसा मगर चलो ऐसा नहीं रहेगा हां सर each mark ऐसे ही बोला हां 8 marks 5 is 40 I don't like to teach this 9th history because one it is very vast second it's Delhi Sultanate because इतना explain करो नहीं सर आधा कैंसर है I initially joined I never used to take SST I used to take it slowly and slowly I remember teaching 9th history is there the tension in the sense not in history I love it ना so आएगा चलो let's not waste our time let's get into what was the last one that I given cyclonic disturbance a common phenomena and also different mode of rainfall and over temperature okay then summer rain provides refreshing air of nature seasons करके एक point लिखना है under this vegetation type or under this vegetation type distinct 4 seasons are observed distinct 4 seasons are observed 1 ये इंडिया का ही सीजन है समझ लो इसी में एक्सप्लेन करूंगा hot dry season ब्रैकेट में डालो मार्च टू मई hot dry season March to May hot and wet rainy season hot and wet rainy season हाँ ये क्या बोला मैंने June to September bracket all inside the bracket next next सर बुक में 3 है हाँ तो इंडिया में 4 है ना सीजन ऑफ रिट्रीटिंग तो 3 ही लिखेंगे थर्ड वन कौन सा दिया है सर ये द कूल ड्राई सीजन प्लस हाँ तो वही लिखो एक्चुअली इंडिया में 1 महीने का एक सीजन है हाँ कूल ड्राई सीजन लिखो और ऊपर 3 कर दो next point natural vegetation wide variety of vegetation found wide
Variety of vegetation found. Next. Islands and coastal regions. Islands and coastal regions experience evergreen forests. And this one. Hello? Lecture actually. Voice அது ஆகாதுன்னு சொல்லாது நான் வந்து பேசுறேன் அப்புறம் right now what is it Lika tropical evergreen and equatorial forest tropical evergreen to equatorial forest. Nice. During the summer, luxuriant forest growth is observed. Luxuriant forest growth is observed. Right from bamboo trees. Right from bamboo trees to climbers, creepers, climbers, creepers. Along with rosewood. Rosewood मालूम है ना? The movie, वो ये. हाँ. Ebony, Sisan. Bamboo already बोल दिया ना? Etc. Next. Broadleaf trees. Broadleaf trees are commonly found and regions receiving excess sunlight. And regions receiving excessive sunlight. Dense forest type. Dense forest type in western Maharashtra
Kerala and Tamil Nadu. Why only these parts only? Yeah, ऐसा जंगल करना जंगल मिलता है. One good rainfall. Second, less population. Population जहाँ भी less है ना, इसका मतलब समझ जाओ क्या है? हाँ, pollution कम है, forest ज़्यादा है. हाँ, deforestation मतलब indirectly क्या? Directly हम लोग क्या होता है? हाँ, जहाँ भी human being नहीं रहता वहाँ सब कुछ अच्छा है. बोले क्या हम लोग भी निकल जाए? क्या है ऐसा? तो रहेगा तो तू कहाँ रहेगा? तो वो तो बता. बस. हाँ, ये देखो ये भाई ना मार्स में. मतलब तेरा बिल्डिंग का नाम मून और इसका बिल्डिंग का नाम मार्स है क्या? इट्स वेरी सिंपल. जहाँ हम लोग रहते हैं उसको साफ सुथरा नहीं रख सकते क्या? I see my own students just after the recess, है ना? क्लासरूम कचरा डब्बा से भी बदतर रहता है. तो मुझे है कि नहीं? एक बेंच के नीचे ऐसा किलो किलो का. सर मैंने नहीं डाला. च्युइंगम वगैरह होता है. च्युइंगम तो मैं देखा तो फिर उसको तो वो फोड़ ही देना. वो लोग ये डाल के रखते हो क्या? पेपर्स इधर उधर वो रैपर ये रैपर. Then the problem starts. What does that problem means? मैंने तो लाया ही नहीं तो मैं कैसे डालेगा? सर मैं जिंदगी में इसको देखा नहीं. आया कैसे? सर इसको पूछो. आज हमारा वो रूम है, कौन में ऑडी रूम है, वो बड़ा चैन स्क्रीन लगा है. उसका इतना अच्छा खासा सॉकेट लगा है. एक दो लड़के लोग लड़ाई करके एक जगह धम करके उस पर गिरा डाल. और ऊपर से उसका पूरा वायरिंग वगैरह निकल गया. देन ऑल्सो इज कीप ऑन फिडलिंग. तो फिर मुझे किसी टीचर ने बोला सर जाके देखो शॉक लगती है एक लोग मरेगा. और पेन लेके जाके उसमें डाल दो. ये मैं जाते ही दो लड़के को वैसा बचाया ना, सब जाके चुप बैठ गया. सर आई शपथ मैंने तो किया ही नहीं. एक तो तू चुप बैठने रहा ना, ऊपर से ये नाटक चालू. ये जरूरत है. Today there was some ceremony in the college. They were all enjoying. तो जो क्या बोलते हैं ना, जो एग्जाम वाला छोड़ के बाकी सबको तो ऐसा लगा कि आज तो क्या मेला है मेला. Real problem for some time. सर उसके बाद क्या हुआ? किसके बाद? अभी वो लटक रहा है. मैंने वो फोटो लिया सडनली तुरंत मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया. वो भाई साहब सर मैं ये यूनिवर्सिटी से उधर ही आ रहा हूँ सर. मतलब किधर? बस ऊपर ही आ रहा हूँ ऊपर ही आ रहा हूँ. आया ही नहीं तो कुछ इधर. मैंने उसको फोटो डाला. इमरजेंसी आके कर वरना मर जाएगा कोई. मर जाएगा तो आई एम द पर्सन टू बी कॉट ना. कौन है कोऑर्डिनेटर? ये है. आइए. तो मैंने बोला है, मैंने मैसेज भी डाला है, प्रूफ भी रखा है ना. करे या नहीं करे उसका नहीं. इलेक्ट्रिशियन आगे कर रहा है वो दूसरी बात है. ये क्या ये जरा 2 मिनट मतलब चुप बैठ नहीं सकते. एंड उनका एग्जैक्ट ऑपोजिट ये है टॉयलेट. उसका कल मीटिंग लिया था. मतलब यहाँ से जब मारो तो टॉयलेट में रहेगा. उधर जाके ये चालू. तो क्या करें सर? अभी गए थे सर. मतलब आधे घंटे से तो अंदर ही है. क्या सर अभी 2 मिनट के पहले गए. और एक प्रॉब्लम है. फिर हमारी एक दूसरी लेडी नीचे से ऊपर आती है. सर किसी स्टूडेंट्स का शर्ट टकिंग नहीं है. तब से रीजन नहीं है क्योंकि अंदर टकिंग करने गया. मैं बोला इसके पहले भी वही. हाँ सर कभी भी बाहर निकल गया. टकिंग. I sometimes feel that our days of studying was too good. Yeah. Your school behavior are same. Your worst. same. उससे भी तुम लोग क्या करते हैं मस्ती? चलता है. सर टीचर वॉशरूम के बाहर खड़ा कर देती है. इतना गुस्सा क्यों? जो खड़ा था वो इधर ही है. ये क्या किया रे? आपने नाम बोला था मैं चुपके बाहर गया. पानी भर गया वॉशरूम में. ठीक है. वॉशरूम में आया तो माम ने पकड़ा. मैंने बोला ऐसे चुपचाप चल मेरे साथ आया. तो माम मुझे
तुम लोग को इसलिए स्टोरी सुना, तुम लोग तो इससे भी बदतर है। वो पानी का इमरजेंसी था सर। हाँ बट उधर ही क्यों करा रखा है? लिया तो निकल जाने का फट से। वॉशरूम भी आ रहा था। वॉशरूम में गया था। हाँ ऐसा बोलना। नहीं चुपने नहीं आया था, वॉशरूम में गया था। वॉशरूम क्या बोल रहा था? अरे वो बुलाने आया। वॉशरूम कर रहा था। हाँ यस। क्या बोलोगे? देखो, one thing you keep it in your mind, ना? You feel now I'm torturing my teacher like this, and she is very troubled by me, but never take the क्या बोलता है? Eye of the teachers. ये मेरे लास्ट ईयर का 12th का मैं स्टोरी सुनाना, तुम लोग हंसेगा। एक लड़का तो got one knife to hit one of my accounts teacher. हाँ, तो मैंने पकड़ा के सर आप पीछे में मत आओ सर, कल उसने लड़कियों के सामने मेरा कचरा कर दिया। तो मैंने कचरा सर आप हटो बस, आपका मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अरे मेरा करता बट उसको तो आज या तो वो या तो मैं। तो मैंने वो चाकू से चुरा के रख लिया। तो फिर वो जाके बोल रहा है अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता ना आज क्या होता टीचर से, क्योंकि टीचर भी कुछ कर नहीं, चुप रहना। क्या कर लेगा तू? बाहर आओ सर। वो है तो कहता हूँ टेंशन का मुंह तोड़ा है, दांत निकाला है, बड़े लड़के लोग ने तब पहले ना सब उसका मुंह में से खून निकाला ना, क्या थोड़े से लोग वो फंक्शन हुआ। सर आप नहीं आए, बोले क्यों? ये रारा जी देखने में ठीक है। अब देखो लास्ट ईयर के टीम आई टोल्ड यू ना 2-3 स्टूडेंट्स ये टीचर का फाइट, तो बस वाली तो बेचारे डाल के ऐसा जाओ सर जाओ वरना मर जाएगा इधर। सर हमारे इधर भी होता जब हैदराबाद गए थे, एक बच्चे जोर से गाल पे मारा, उसका जजमेंट बस के बाद मैं जैसे यहाँ क्या नहीं सर वो गिर गया था, उसको उठाया तो तेरा मुंह से क्यों खून आ रहा है? सर मैं भी गिर गया क्यों? सर कुछ नहीं सर, छोटा सा प्रॉब्लम हो गया सर, आप बैठिए सर ना क्या तो लड़के के अच्छा सर आप जल्दी आए हो ना, तो मुझे लगा कि मैं तो कहीं अंदर से सर आप ऐसे कैसे रहते हैं? रोज मारपीट होता है, कभी अंदर मारता है बाहर लेके जाके मारता है, और मुझे लगा कि तुम दोनों को मारते हो। सर आप बहुत अच्छा है, मतलब क्या कर सकते हैं तो पार्किंग कर सकते। ठीक है, ह्यूमन अच्छा फिर एरियाज विद rainfall in dry season, areas experiencing rainfall in dry season have tropical deciduous forest, have tropical deciduous forest, have tropical deciduous forest. Next. Even during, not even, trees shed their leaves 6 to 8 weeks to preserve, क्या preserve करते हैं? Moisture. क्यों फ्रिज में रखे नहीं थे खाना वाला क्या? preserve food. वो इंटरनेट लगता है ऐसा। Next, teak, sal, teak, sal, sandalwood, महुआ, हिंदी में बोलते हैं ना महुआ, महुआ, आर्ट फार्म,
You know what is sandalwood, na? Yes. Very costly. For the last part, after this I'll show you the video, human adaptations. After this, no lectures, na today? मतलब आज के बाद lecture आज मैं ये finish करूँगा. हाँ है ना? नेक्स्ट सैटरडे को भी है और उससे पहले हाँ नेक्स्ट मतलब ये वाले सैटरडे को है. आज के हाँ नेक्स्ट सैटरडे ये वाला सैटरडे को उसके बीच में भी है ना? Because pollution का मेरा 6 lecture का slot है. Pollution is 3 big chapters. हाँ है सर. है ना? Next week है. कभी है? Next week 11. है 3 घंटे उससे पहले ट्यूसडे को भी है. Sure. Because I need to cross check. One, the attendance is like this. Second, we have so much to finish. And third, I myself Tuesday को भी है. Tuesday today. Human adaptations. Agriculture is the main occupation. Agriculture is the main occupation practiced in alluvial fertile plains. Practiced in alluvial fertile plains. Come terraced hills. Since good rainfall, and sufficient labor. India में भी यही कहानी है ना. Normally we used to agriculture. Good rainfall and sufficient labor. Next. Crops like rice, wheat, maize. Coupled with this now, this is millets. Okay, what are millets according to you? Numbers only jawar. It is jawar, bajra, and ragi. Together it is millets. Right? Nagis. Nachni. कोई दूसरा रखो, उसका पाउडर डालो. हाँ, next. Cash crops like sugar cane, tea, cotton, coffee are grown. That's it. Otherwise, all this, I'll try to get tropical monsoon climate. इसमें इंडिया का पहले आएगा. The check break is 8:20 ना? नहीं, we started at 6:20. 6:20. 5:20 नहीं 6:20. 5:20 की तो क्लास स्टार्ट हुआ है. हाँ स्टार्ट हुआ. तो आ लेट और बोलने का भी लेट. See this? While can I check this one? Right. Yeah. वो तूने बोला it was not Robert, my dear, it was FedEx. Though machine which will try to remain in the space for some time, finding out. Last time. ये रे. हाँ सर जी. FedEx था. हाँ वो रोबोट जाके रहेगा. रॉबर्ट नहीं है रे वो. मशीन. जो भी है छोड़ दे. तुम लोग से मैंने पूछा था. सिर्फ पलाश हुआ है. क्या पलाश? हाँ. कौन है वो चश्मा वाला. आया? नहीं वो बोला है सर. वो तो ये आपको बोला. वो कभी-कभी मुझे लगता है कि पागलों की तरह कुछ भी बोल देता है ना? उसका बिहेवियर भी ऐसी है.
क्यों रहे वैसे? सर बट वो मार्क्स अच्छे ला हाँ, वो मार्क्स अच्छे लाने का बात नहीं है. Sometimes he speaks anything. ऐसे तो कुछ भी किधर में बोलेगा तो पब्लिक में दूंगा, पब्लिक बोलेगा. Yeah. Let's connect nowadays the videos here. Look at the volume. For so many of us in the developed world, the seasons are defined by temperature. The freshness of spring, the heat of summer, the chill of autumn, and the cold of winter. But for billions of people on our planet that live in the tropics, the seasons are marked by the presence and absence of rain. The annual coming of the rains after months of drought, with the renewal of life from the giving water. And then, after months of rain and cloud, the sun reborn into blue skies as the next dry season begins. This is the domain of the tropical wet and dry climates. This is the tropical monsoon and the tropical savanna. In the last episode, we looked at the tropical rainforest climate zone, where rain occurs throughout the year. But most of the lands of the tropics experience some kind of drought or reduction in rainfall during the year. The severity of this drought and the total amount of rain that falls in a year determines whether it comes under the classification of monsoon or savanna. Monsoon areas are overall wetter or have a shorter drier season, while savannas are drier overall or have a longer drier season. So what accounts for this variation in rain? In the tropics, the sun will be directly above you at noon at some point in the year. And if the sun is directly above, it means it's heating that part of the earth more than any other. And that means rising air, the pulling in of moist air from the surrounding seas and oceans, and lots of rain. The band of the earth where these winds come together has for centuries been called the doldrums by sailors, because there is very little wind at this confluence and could lead to weeks or even months of being stranded in a sailing ship. The rains follow this band as it tracks the sun above and below the equator throughout the year. In July, it's summer in the north, so this band is located to the north of the equator, while in January, it is at its furthest extent south of the equator. The winds which come into this convergence are called the trade winds, named by those same sailors of centuries past, since they were so predictable, sailing ships could count on them to ply their trade. In the tropical wet and dry climate zones, these winds switch direction throughout the year, depending upon whether the doldrums are to the north or south. When they originate from the ocean, they bring in moisture and rain, but when they come from the land, they are bone dry and bring nothing. So what kind of landscapes do we find in these regions? Depending on the severity or longevity of the dry season, we can find anything from tropical forests to open grasslands. On the wetter side of the spectrum, we find much of the jungle of the Amazon and Southeast Asia,
But such forests do not have as rich a biodiversity as the tropical rainforest. As the rainfall reduces the further out we go, we find less dense, drier forests until finally we have open grassland, the savanna itself. The tropical grasslands of Africa are perhaps some of the most iconic landscapes in the world. Here, the biodiversity of the tropical rainforest is exchanged for huge numbers of large herbivorous animals hundreds of miles each year to follow the rains and the green grass that feeds their vast numbers. And they themselves पूरा ही देखें इधर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मानसून देखेंगे ना क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो देयर ये है ट्रॉपिकल मानसून अंदर वीडियो ये टू टाइप सवाना ये देख रहे हैं क्या ये तो देख रहे हैं ये भी देख रहे हैं ये अभी चालू है ना ये देखा था सर हाँ ये भी देख रहे हैं करेक्ट ये देखा ये देख रहे हैं ये भी देखा ये हाँ वो भी देखा थोड़ा वेल फिनिश ऑफ दिस है ना just waste of time चलो next one Mediterranean हाँ ये मैं दिखा देता हूँ this is a wonderful you must watch this you will love to see what is Mediterranean regions सब beaches ही है इधर yes ये देखो my favorite that is Mediterranean regions ये देखते ये पास में दिखा the world's most famous sea. Endless coastlines and beaches. Histories and culture as rich as any on Earth. Blessed with one of our planet's finest climates. It's the only one with a dry summer and wet winter. But you'd be mistaken in thinking that this sea was the only place where such a climate existed. Copied across 4 other continents, this much desired climate is home to a very famous state and 3 very different countries far into the southern hemisphere. But in all places, this climate just has one name, the ancient home of the summer sun, the Mediterranean.
As we continue our journey in this series from equator to poles, it's now time to consider the second of the three climates occupying the temperate areas of the mid-latitudes, the Mediterranean climate. This climate zone has a similar temperature range to the humid subtropical that we covered in our last episode, between 20 and 35 degrees in summer and 5 to 20 degrees in winter. But the most immediate and striking aspect of this climate is in its rainfall. I don't know why the volume is so less, but then we will see why it is. Where we ended from here, is it? No, there ends still going. Video तो